So this is how I'm converting my flop and a very flop day. Hi guys, good morning. So I am going to लाजपत नगर to buy boots. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ब्रांडेड कपड़े बाय करती हूँ मैं ज्यादा करके अपना सारा सामान फ्ली मार्केट से ही लेती हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो बूट्स एंड ऑल कपड़े आई थिंक तू सिर्फ 10% लेती है, 90% हम फ्ली मार्केट वाले हैं। हम फ्ली मार्केट वाले हैं एंड द थिंग इज दैट जस्ट बिकॉज विंटर्स आर हार्डली फॉर 2 to 3 months आई वांटेड टू बाय अ बूट। मैंने पहले भी लाजपत नगर से बाय किए एंड आई विल टेक यू अराउंड विथ मी to the market. I'll show you from where I get my boots and you know most of my footwears which are really very comfortable. Like people like me buy from brands also when they are in sale. I love Allen Solly shoes and footwears because it's really very comfortable. Second, if you go in brands, I have been buying from H&M during their sale time and I have got from Code also, I think Tresmode and Code. So these brands only, and mostly I buy from Colaba, or else if I am in Delhi I buy from Lajpat Nagar. So I had 2 or 3 work, so I have to go to Lajpat Nagar, then CP मोहन सिंह प्लाजा, क्योंकि मैं जीन्स भी मैंने H&M से बाय की और फिर आई वॉन्टेड इट टू मेक इट लिटिल स्टाइलिश. ओके, सो वो जो साइड में वो पट्टी सी नहीं, बॉर्डर से नहीं जाता, वैसे मुझे लगवाना था तो वहाँ आराम से हो जाता है. एंड आई वॉन्टेड इट टू मेक इन माई फिटिंग लाइक अ नैरो बॉटम एंड ऑल, तो वो सब चीजें हो जाती है. एंड ट्रस्ट मी, H&M jeans this time is just for 699 rupees. They are worth buying. They're really very comfortable, very nice. Like I don't get a proper jeans for myself, and always it has been like I have invested so much and I've wasted money to get a good, like a very nice jeans for myself, and this time I got. So they have these skinny jeans and trust me, they are really very nice. They are just for 699 rupees. So I got 2 or 3 and you know I am just like customizing it accordingly. I wanted to, they are not narrow bottom. Okay, so मुझे वो pick करना है CP से. Then I have to buy some socks because winters have come, and 2-3 things, that's it. So I'll take you around with me. Today is a shopping day. Like today I am going out for this. Okay, so the lipstick which I am wearing, I'll just let you know that this is from wait, मैंने आज साथ में ही रखी because I know I get comments के कौन सी लिपस्टिक मैंने रखी ना, shit मेरे घर पे रह गई. Okay, so this is from Bourjois. So you know they have 2 different shades, so I've mixed them together. Unfortunately it's not available in India, so there's no point. Okay, you can buy it from Amazon, but still I don't think so that it's genuine enough because there the rate is very भी हो सकती है, but I don't know. I don't know. It's very costly, like 2,000 to 3,000. Whereas I got it at a very good price when I was in Australia. I think 700 or 800 rupees. It was like a pack of 2 gifts. Okay, so not the genuine part. I'm sorry, but I would say that they're not worth. They're very very expensive over there. And that's it. These shades are from H&M. Yes, these shades are from H&M. You know, one tip for my side, जो जितना मैंने experience करा है, you should buy whenever you travel outside India. Just remember one thing, that you buy makeup and clothes from there. Especially in like we have an experience from Europe and Australia. यार बहुत वहाँ पे ना डिस्काउंट और जेन्युइन प्रोडक्ट मिल जाते हैं वहाँ पर. मेकअप भी और क्लोथ वाइज भी. ज़ारा पहले मैं सोचती थी, जब हम सिंगापुर गए तो तब तक हम ऐसे ही सोचते थे कि यहाँ ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो हमने कभी गए ही नहीं. हमने यूरोप में सबसे पहले ट्राई करा और हमने वहाँ का ज़ारा इज लाइक इंडिया का लाइफस्टाइल या शॉपर स्टॉप. अरे शॉपर स्टॉप भी महंगा है.
Zara पे you will get around in 300 to 400 rupees और on मतलब sale time. जो इंडिया में अराउंड वो 1500 की चीज है वहाँ पे अंडर 500 में मिलती है. और जेन्युइन ड्यूरिंग सेल टाइम, बिकॉज Zara इज अ स्पेनिश ब्रांड, तो वहाँ का लोकल हो जाता है, तो इसलिए बहुत सस्ता है. एंड व्हेनेवर यू ट्रेवल आउट ऑफ इंडिया, मेकअप एंड क्लोथ्स. Primark है, फिर in Australia you have Kmart. But food is expensive. Yes, food is very expensive. Like food and stay, both are expensive. But this clothes shopping and makeup shopping both is are very cheap. And the main thing also is that you will get genuine products. That's the main thing, that वहाँ पे इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ, पर तभी भी आदमी नहीं लेगा कुछ भी, इतना संतुष्ट है. अरे इस बार मैंने लिया ना, क्या लिया? हेयर वैक्स. 3 डब्बे यार इतना सस्ता मिला मेरे को. 500 रुपए के मैं 3 डब्बे लाया. मैंने पहले 1 डब्बा लिया, वो मैंने ट्रायल करा, उसके बाद में 2 डब्बे और लेके आया. उनका इतना अच्छा इतना सस्ता, और उसकी जो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी. मैं 3 लाया. नहीं, पर तुम अगर बाहर जाते हो, ये इतना, और 2 डब्बे मैं खा चुका हूँ, खत्म. इसकी हाइट 6'4" है. तो यहाँ पे इंडिया में यू डोंट गेट सो मेनी ब्रांड्स हु मेक क्लोथ फॉर यू नो सच हाइट, बिकॉज दीज हाइट्स आर वेरी यूनिक. 6'2" भी ठीक है, बट 6'4" इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके, सो ही इज 6'4". इसे पता है कि इसकी ना सारे कपड़े बाहर ही मिल सकते हैं, बट ये नहीं खरीदेगा उससे. नहीं, मैंने इस बार ऑस्ट्रेलिया से तो खरीदे. अरे इस बार चाइना मेड इन चाइना वाली टी-शर्ट. इको यूनाइटेड और अनलिमिटेड पता नहीं ऐसे एक ब्रांड है, जो आई सॉ जॉन इब्राहिम वेयरिंग इट, और वो ब्रांड मेरे को ऑस्ट्रेलिया में मिला. एंड यू विल नॉट बिलीव दैट आई गॉट एवरी टी शर्ट फ्रॉम देम अंडर 500 रुपीज, और मैं कम से कम उनकी 5-6 टी शर्ट लेके आया. पर वो भी घसी हुई थी अभी. यार घसी क्या हुई थी? जिम में तो अच्छी लगती है, जिम में पहनता हूँ मैं. कोई नहीं, आदित्य की शॉपिंग की स्किल्स ही कुछ अलग है, वो अलग लेवल की है, तो नो कमेंट्स. ओके, सो दिस ड्रेस इज फ्रॉम Zara. अब ये ड्रेस में क्या कंफ्यूजन है कि इसका आगे का पार्ट पीछे जाता है या पीछे का पार्ट आगे आता है, उसके कुछ पता नहीं है. यू नो, लाइक द लोगो इज हियर. जो मैं फ्रंट में पहन रही हूँ वहां लोगो है, बट वो शेप ऐसी है कि अगर मैं उसको पीछे पहनती हूँ तो वो अजीब सा लग रहा है. एंड दिस ड्रेस आई गॉट इट फ्रॉम स्पेन. हाँ, 2 साल पहले की ली थी, मैंने कभी पहनी नहीं, बट इट्स अ वेरी नाइस थिक मटेरियल, सो आई एम वेयरिंग इट. यू विल सी ऑन माई इंस्टा द फोटोज. ओके, एंड that's it. Now I'll go and let you know what I'm taking from where in Lajpat Nagar. This was my workspace some years ago. This was that building. This building you can see. इसी गेट से मैं जाती थी. So unfortunately I didn't got my like size नहीं था, and I did not like other variety. I wanted a very simple one, not the lacy ones. Bad luck. So now I'll check either in H&M because CP has H&M. हाँ है तो सही मैम, बट कार की प्रॉब्लम आती है. कुछ नहीं प्रॉब्लम आनी. हाँ, ये लगाई हूँ. Unfortunate, bad day. So I'll just check at H&M and maybe in Allen Solly if I get the way I wanted. I want a very simple one. So let's see. So today I'm taking you all out with me for shopping. So Lajpat I did not get anything. Means I wanted just a pair of shoes. I did not see what other things are there in the market. As I didn't wanted anything now, and like Lajpat Nagar is much famous for Indian things, you know, like suits and such kind of party wears and those things. Like this market is my mom's favorite market. Whenever she comes to Delhi, वो मत्था जरूर टेक के जाती है इस मार्केट में. She loves this market and I always suits mainly suits के लिए बहुत famous है. So I usually bring her here for every time whenever she comes. So this is how I'm converting my flop and a very flop day. I did not get those boots.
I did not get my jeans done. तो भैया भूल गया करने के लिए. इनफैक्ट मैंने उसे सैटरडे को दिया था यार. And I wanted to convert the flop day into something good. So we have come to this Triveni cafe here. I love their food. Mainly their sabudana khichdi. So I'm going to have that. Then I'll go home. I have to film 2 videos for DDD. And that's it. Hey, congratulations to everyone. We have crossed 17k. Tomorrow on Saturday I'm going live. And we'll just chit chat with each other so that we get time. Aditya is busy talking to his brother. And that's it. By the time you're seeing this video, maybe we have crossed 18k. Let's see. Fingers crossed. And thank you so much, yeah. Thanks to everyone. I'll take you around with me to Triveni's cafe. If you're coming like CP, so please visit this cafe. The ambience is really good. It's near India Gate. Near India Gate. Very affordable but really very nice. Okay. So this is what Aditya have ordered. A thali, and Triveni's thali is really not heavy at all. They have kachumbar, they have raita, they have dal, they have 2 sabjis and chapati and pulao. So their thali is really like ghar ki thali. So I have ordered, look at this specs ka marks. So I have ordered sabudana khichdi because I love their sabudana khichdi. And now we are going to eat, okay? So that's it for today. It was a lovely date with Aditya. Plus it was an affordable date just because we went to this Triveni cafe. The food is really very good and very affordable, I would say. Very nice place to click pictures or to just sit and talk. And I hope you enjoyed this daily vlog, like bits of me, and do subscribe to my channel. Hit the button like and stay tuned for more and more videos. Thank you so much for watching. Bye.